visiting this property, if perfection could have any definition, that should be Major General Deepak Saini ji. आज मैं उनसे बातचीत करूंगी और पता करूंगी कि उनका ड्रीम हाउस आखिर वंस इंफ्रा ने कैसे पूरा किया और कैसे वो इस घर को एक फीलिंग के साथ लिव कर रहे हैं. हेलो दीपक सर, कैसे हैं? हेलो प्रिंसी, आई एम फाइन. सर, घर अपना घर होना एक लिटरल डेफिनेशन होता है, एक ड्रीम हाउस होता है जो आप हमेशा से सोचते हो. एंड बीइंग इन फौजी, आपने तो देश को सर्व किया है, देश ने आपको बहुत कुछ दिया, आपने देश को बहुत कुछ दिया है. आज आप अपने ड्रीम हाउस में रह रहे हैं. हाउ दैट फीलिंग इज? Princey, it is a feeling which cannot be described in words. Yes. We have worked very hard. Yes. It took me about 3 years of planning. And then there were so many people and the stars, they came together to ensure that we could construct this house. Great support in this was my wife Kavita, and she's done the interiors and I have been involved more or less in the exterior and the construction part of it. And then there is this great company called Once Infra with Mr. Gaurav as the founder of that company, and it was an amalgamation of all this, and lot of hard work has gone into it. Every corner, every room, yes, every piece has something which reminds us of so many other things, the journey that we have traveled. So this is how this house has come about. Any feelings for your dream house? And if you want to explain in one line or two lines? One line, it will be very difficult, Princey, because every corner, every room, every piece of furniture, the sofa on which you are sitting, we've traveled across the country. Yes. We have traveled half the globe, and so we have got memorabilia from all over the place. There are small memories, and therefore we ensured, and my wife was very particular from day one that she doesn't want a interior decorator, interior designer, an architect to make this house, because for him those feelings don't exist. For him or her those feelings don't exist. Yes. Because only the person who's attached with these things will be able to feel it and then visualize and create a place, yes, for that. So the house was actually created by first keeping in mind that the stuff that we have. I mean, आप जो बोल रहे हो ना वही soulful है, तो रहने में तो यहाँ पर I mean that would be another kind of experience. So finally, congratulations for your dream home, and yes, Once Infra have been a one-stop solution for you to have all the emotion, feeling and trust in this house. I would like to add here, for the sake of record, that Once Infra and lot of other people, yes, who came together, God, भगवान लेके आया उनको ये घर बनवाने के लिए. Some of them are like that, some are my colleagues, some are my friends, and that is how this project was possible in just 10 months, yes, during peak of COVID. Wow. And support, I got all the support from Once Infra. There were times and days and weeks when nobody from the company could visit, because it was not possible. Yes. We were under lockdown. Yes. But work continued here, and we were able to finish this project in 10 months. अब फौजी हैं तो टाइम तो उनको मेंटेन करना था, otherwise you do court martial. No, nothing like that. But it is the support and the trust, Yes, definitely. which we had amongst ourselves. Yes. That goes a long way. Uh, That goes a long way. Okay, so it was great talking to you, and yes, Once Infra have completed your dream, and I hope कि Once Infra और भी घरों के और भी लोगों के dream home को बनाए. And thank you so much. I love talking to you. And you're amazing. Thank you, Princey. Thank you, Princey. Thank you so much. Thank you.
इंदौर टॉक आपके लिए प्रॉपर्टी शो लेकर आता है जिसमें हम बातचीत करते हैं उन लोगों से जो बनाते हैं घर या फिर जिनके घर बन चुके होते हैं। आज मैं बात करने वाली हूं वंस इंफ्रा से, जो कि बना रहे हैं कुछ ऐसे प्रेस्टीजियस क्लाइंट्स के घर जिन्होंने बताया है उनका एक्सपीरियंस, स्टैंडर्ड और क्वालिटी। आज उनके ओनर से यानी कि उनके फाउंडर से हम बातचीत करेंगे, मिस्टर गौरव से। हेलो सर, कैसे हैं? हेलो प्रिंसी, हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली गुड। सर, वंस इंफ्रा, इट इज इन लाइक वंस इंफ्रा, इट इज ऑलमोस्ट अपने नाम में ही है कि एक ही जगह आपको सब चीजें मिल जाएंगी। तो व्हाट इज ऑल अबाउट वंस इंफ्रा? Basically, Once Infra deals in 3 sectors. This is one of the sector, residentials, where we are doing home construction. As I said, home itself is a word. जहाँ हम house ना बोलते हुए home we are saying. Yes. Because it's a emotion driven sector. Yes. Okay, we are having other sectors too, industrial sector, then government sectors. But my major emotion driven sector is home construction. So we are trying to fulfill people's dream and want to shape them by taking their requirements. We try to fulfill whatever they are requiring. We just got some maybe blessings, God blessings, that till now we have completed more than 500 projects, and based on those experience, I will love to say my team, my clients, and I am blessed that I am getting all those sort of peoples around me, and they helped us to grow this Once Infra. As you have seen by individual surveys also, we are into the top 3 construction companies in Indore and central India. So this way, Once Infra, I want to say that we are there to help people in constructing their dream home. Okay, so अगर वंस इंफ्रा के टाइप ऑफ वर्क हम पता करना चाहें तो क्या क्या वंस इंफ्रा करता है? वंस इंफ्रा होम कंस्ट्रक्शन के अलावा इनटेक वेल्स हो गया, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं मेजरली, यू कैन से ईटीपी टैंक्स, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, एसटीपी प्लांट्स, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स के अलावा वी आर इनटू द इंडस्ट्रियल डिवीजन. वी हैड वर्कड विद डाबर इंडिया, ब्रिजस्टोन, आदित्य बिरला ग्रुप, then urban mills, nepa mills, all those sort of projects we had done till now. And I mostly like to work with this home residential division, just because I get that feeling of satisfaction after seeing the smile on the face of my customer, my clients. So that is the thing which is giving me, you can say, inspiration to work more and more toward this segment, because either way I am fulfilling their dream, and by the blessing of their if I am giving them good things, definitely I will get blessing, and by this thing I am getting my pleasure. अब blessing की तो बात हो गई, आप अच्छा काम कर रहे हैं ये भी हमने देख लिया, बट मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है इकोनॉमी, बजट. हाँ, मैं ये जानना चाहती हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से लेके एक हाई क्लास सोसाइटी की फैमिली तक वंस इंफ्रा क्या ऑफर करता है? देखिए, आई टोल्ड यू, आई पर्सनली नीड टू लिसन देम. जब मैं उन्हें सुनता हूँ या मेरी टीम उन्हें सुनती है, देन वी कैन सेंस कि ये किस बजट में घर बनाना चाहते हैं, व्हाट इज देयर डिमांड, एंड इन डिमांड व्हाट ऑल बेस्ट. यू कैन से कि हम किसी पर्टिकुलर थिंग को, बिकॉज दिस इज अ कस्टमाइजेशन, हम सेम अमाउंट में, सपोज समबडी वांट टू एक्सपेंस, हमें पता नहीं होता इनिशियली. इफ यू आर गोइंग टू बाय समथिंग, यू आर हैविंग फिक्स बजट, बट व्हेन यू आर गोइंग दैट शॉप और समथिंग, यू विल मोस्टली पेड ओवर बजट थिंग and you buy that. तो ये concept होता है human का. On those lines, I would listen them, उनका समझ के, then we will deliver based on their expectations. तो बेसिकली आप सबकी डिमांड्स को पूरा करते हैं और फुलफिल करने के बाद वो भी ध्यान रखते हैं कि सामने वाले को परेशानी भी ना हो और हमें भी परेशानी ना हो. दैट इज बहुत अच्छा रास्ता है बीच का. एक आखिरी सवाल, एक मैसेज बिल्डर, कंस्ट्रक्टर्स एंड लोग जो आपको अप्रोच करना चाहते हैं उन सब के लिए प्लीज. सभी के लिए मेरा यही मैसेज है कि डू कनेक्ट विद अस. वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन योर ड्रीम होम कंस्ट्रक्शन, and whatever services we can give, either starting from designing till the execution, me and my team will always be there to help you out in each and everything. Thank you so much, sir. That was amazing talking to you. Thank you. And literally, you are transforming house to a home with a feeling of trust and everything. Thank you so much. Thank you.